So, let us start lesson number 19 today, that is the little mouse. It's a nice story again about a sage, and in this story we'll see the little mouse which was turned into a baby girl by the sage, and later on the sage was worried about to find out a suitable partner for her. Now let's see what happened further in the chapter. Before starting the chapter, let's see the meanings of some of the difficult words given in this chapter. Meditate. Meditate means to worship, praying to God. Clear? Meditate means worship, which means praying to God. Irritate. Irritate means make annoyed or angry, making someone angry. Then mighty. Mighty means very powerful. Clear? Full of strength, very powerful. Approach. Approach means come near, come closer to someone. Summon. Summon means to call. Clear? These are the few difficult words given in this chapter. Now, as I read the chapter, you all should keep your finger in your book and concentrate here in the class. Try to understand this chapter. On the banks of the river Ganga lived a great sage. On the bank of river Ganga there was a sage. Sage, you all know, the Sadhu Mahatma, and he was living at the bank, at the side of the river Ganga. One day when the sage was meditating, when the sage was praying to God, when the sage was worshipping, a little mouse fell into his lap. One small mouse fell into his lap, was fallen down. Clear? एक छोटा सा माउस था जो ऊपर से नीचे उस सेज की गोद में आकर गिरा. A kite had dropped it from above. A kite. Kite is a bird of prey. Bird जो शिकार करती हैं, जैसे बाज वगैरह होता है. Clear? Kite. Kite is a bird, and that kite had dropped it from above. उस काइट ने इस छोटे से माउस को ऊपर से नीचे फेंक दिया था और ये माउस आके उस सेज की गोद में गिरा. At first, the sage felt irritated. In the beginning, the sage got angry. Okay, he was very irritated. He was annoyed. But soon he felt pity on the helpless little mouse. But very soon he felt pity. Pity means he was very kind towards that mouse. Clear? उस पे सेज को उस माउस पर बहुत दया आई. The sage turned it into a lovely girl child. Now what did the sage do? With his parts, he just turned this little mouse into a beautiful baby girl. उस सेज ने इस छोटे से माउस को अपनी पावर से एक सुंदर सी छोटी सी बेबी गर्ल में कन्वर्ट कर दिया. He called his wife. You always wanted a daughter. Take her as your daughter. Then he called his wife. उसने अपनी वाइफ को बुलाया सेज ने और उससे कहा, You always wanted a daughter. तुम्हें हमेशा एक डॉटर चाहिए थी. Take her as your daughter. आप इसे अपनी डॉटर के रूप में अपने पास रखो. The wife was overjoyed. Now the wife was very happy, delighted. She took the little girl into the house. Now she took this little girl, she welcomed this little girl into her house and she started taking care of her. Okay, she was very happy. The wife of sage was very happy after receiving this baby girl. ये छोटी सी बेबी गर्ल मिलने के बाद वो साधु की जो वाइफ थी वो बहुत खुश हो गई. उसे अपने घर में ले गई और उसकी देखभाल करने लगी. The sage's wife looked after the girl with care and love. जो सेज की वाइफ थी उसकी देखभाल करने लगी बहुत प्यार से. The girl grew to a pretty young woman. धीरे धीरे वो जो गर्ल थी वो बड़ी होती गई और एक प्रिटी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वुमन में, यंग वुमन में
कन्वर्ट हो गई, वो एक सुंदर सी लड़की बन गई. The sage and his wife started searching for a suitable match for the young woman. अब इस सुंदर सी लड़की के लिए, इस यंग वुमन के लिए सेज और उसकी वाइफ एक सूटेबल पार्टनर को ढूंढने लगे, एक उचित पार्टनर उसके लिए ढूंढने लगे, उसकी मैरिज करने के लिए. The sage decided that the most powerful man in the world would marry her. अभी सेज ने डिसाइड किया कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है, he will marry with this pretty woman. The search for the mightiest led him to the sun god. इस तरह एक सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति की खोज में ये जो सेज था सन गॉड के पास पहुंचा. My daughter wanted to marry the most powerful man, said the sage. Now sage told the sun god that my daughter wanted to marry. मेरी जो डॉटर है वो एक पावरफुल मैन के साथ शादी करना चाहती है. The sun god spoke. I am not the mightiest. The cloud is able to cover me. The cloud is stronger than me. Now sun god said, I am not the mightiest. मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ. The cloud is able to cover me. ये जो क्लाउड है, ये जो बादल है, ये मुझे कवर कर सकते हैं. The cloud is stronger than me. और ये जो क्लाउड है, ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है. आपको मालूम है ना, जब अच्छी धूप लगी होती है, सूरज होता है और यदि बादल आ जाते हैं तो बादल में वो सूरज छिप जाता है. Isn't it? For this reason, sun god said that these clouds are mightier than me. ये जो clouds हैं ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है. Turn the page. Soon the cloud was summoned and the sage repeated his request. बहुत जल्दी clouds को बुलाया गया. Summon means called. Clear? Very soon these clouds were called and again the sage repeated his request. सेज ने दोबारा अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट किया. The cloud said, I am not the mightiest. The wind can carry me along. Now cloud replied that I am also not the mightiest. मैं भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ. The wind can carry me along. ये जो हवा है, हवा मुझे अपने साथ ले जा सकती है. I am not that strong to remain at one place, but this wind can carry me from one place to another. So the wind is stronger than me. The sage approached the mountain. Next was the turn of the wind. To the sage's request, he said. Now next was wind's turn. The sage went to wind. Now the same question सेज आस्क्ड टू विंड. अब वो जो क्वेश्चन था उसका सेम क्वेश्चन को सेज ने विंड को भी बोला कि मेरी बेटी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है. माई डॉटर वॉन्ट टू मैरी द माइटिएस्ट वन. देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द विंड. विंड ने क्या रिप्लाई दिया? विंड सेड, पार्डन मी, फॉरगिव मी, क्षमा करें मुझे. योर होलीनेस, I am not the mightiest. उसने कहा मैं सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली नहीं हूँ. I am not the most powerful. I am easily stopped by the mountains. The wind said, I am easily stopped by the mountains. यदि जब मैं हवा बहती हूँ तो माउंटेन के द्वारा मैं क्या होती हूँ? रोक दी जाती हूँ. So wind also said, I am not the mightiest one. The sage approached the mountain only to hear the reply. Now the sage came near the mountains and said the same question and wanted to ask. Clear? Wanted to get the reply from the mountain also. I am not the mightiest. I am made weak by the holes made by mouse on my base. Now mountain also said, I am not the mightiest. मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ.
I am made weak by the holes made by the mouse on my face. मेरी शक्ति कब खत्म होती है? जब मैं एक माउस के द्वारा मेरे बेस पर होल करने से जब एक छोटा माउस भी मेरे बेस पर होल कर देता है, उससे मेरी शक्ति कम हो जाती है, वो भी मुझे खोखला कर सकता है. क्लियर? देन माउस सेड, दिस माउंटेन सेड, आई एम नॉट द माइटीएस्ट. माउस इज माइटियर देन मी. माउस इज मोर पावरफुल देन मी. देन केम द माउस टू द आश्रम. ही लाइक द सेठ's daughter. अब ये जो छोटा माउस था, जो माउंटेन के बेस पे होल करता था, उस माउस को कहाँ लाया गया? आश्रम में लाया गया. और जब उसने सेज की डॉटर को देखा तो उस माउस को वो डॉटर पसंद आई. ही वॉज रेडी टू मैरी हर बट ऑन वन कंडीशन. उसने कहा सिर्फ एक कंडीशन पर मैं इससे शादी कर सकता हूँ. आई कैन गेट मैरी टू हर ओनली ऑन वन कंडीशन. I will marry only a she mouse. He said, I will not marry this girl, but I will marry a she mouse. Clear? The sage stood up. He made a circle in the air with his fingers. Now, sage stood up. Sage जो था वो खड़ा हो गया और उसने हवा में अपनी उंगली घुमाई और एक सर्कल बनाया. The next moment, the young woman disappeared. अगले ही क्षण वो जो यंग वुमन थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी, वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गई. इन हर प्लेस देयर वॉज अ शी माउस. और उसके बदले वहां पे क्या था? एक शी माउस थी. बोथ ऑफ देम वेंट इनटू द जंगल एंड लिव्ड देयर हैप्पीली. ये माउस और शी माउस दोनों जंगल में चले गए और वहां पर हैप्पीली रहने लगे, खुशी से रहने लगे. सो द स्टोरी एंड्स हियर. Dear children, in the beginning this girl was a mouse, and at the end of the story again she was turned into a mouse. Okay, I hope this chapter is clear to you. So through this chapter we learn that we should not think who is mightier by the physical appearance of something. Clear? We don't think that this is very big, so it's very mighty and powerful. The small things which look very small are also having their own importance. So I hope it's clear to you. Thank you.